Good morning student, welcome to Shivaji group of institution online classes. Student, in today's class we will revise force of friction. Force of friction. So what is friction? A force which acts at the surfaces of contact when one body moves upon another body is called force of friction or frictional force. So what is force of friction? A force which acts at the surfaces of contact when one body moves upon another body is called force of friction. Means जब एक बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो दोनों की सर्फेसेस, दोनों की कॉन्टैक्ट सर्फेस, सपोज वन बॉडी इज दिस एंड अनदर बॉडी इज दिस, सपोज इन दोनों की कॉन्टैक्ट की सरफेस के बीच में जो अपोजिंग फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज force of friction. For example, when we apply a force on this box in this direction, then frictional force is always appears in the opposite direction of applied force. मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड अनदर एग्जांपल, इफ वी रोल अ बॉल ऑन अ प्लेन ग्राउंड देन इट मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड आफ्टर दैट स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप. बट नो फोर्स इज अप्लाइंग इन अवर साइड, क्योंकि हम लोग ने अपनी तरफ से कोई उस पर फोर्स नहीं लगाया, बट फिर भी वो बॉल क्या हो गई? स्टॉप हो गई. इट मीन्स उस पर कहीं ना कहीं से कोई फोर्स अप्लाई हुआ है. दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड स्टूडेंट, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ स्टूडेंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, first is the smoothness or roughness of the surfaces in contact. Means more the smoothness on the surface of a body, then less will be the friction, or more the roughness on the surface of a body, then higher will be the friction. Means to say, surface, contact surface जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लो हो जाएगा. एंड जितनी ज़्यादा सरफेस रफनेस वाली होगी उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हाई हो जाएगा. एंड सेकेंड पॉइंट, द वेट ऑफ द बॉडी. मीन्स जो सरफेस के ऊपर जो जिस बॉडी को हम लोग को मूव कराना है, वो बॉडी का वेट जितना ज़्यादा हाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज़्यादा उस पर अप्लाई होगा, और जितना लो होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही कम होगा. नाउ थर्ड पॉइंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स जब भी दो बॉडी एक दूसरे पे कांटेक्ट करती हैं तो इसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता कि ये बॉडी इतना सा टच कर रही है इस बॉडी को या बहुत ज़्यादा टच कर रही है. इसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ सरफेस की स्मूथनेस और रफनेस पे ही डिपेंड करता है.
Now student, types of friction. Student, there are three types of friction. First is static friction. And second one is sliding friction. And third is rolling friction. So what is static friction? Student, a frictional force that comes into play when one body tends to move over the surface of another body, but actual motion has yet not started, is called static friction. So student, what is static friction? A frictional force that comes into play when one body tends to move over the surface of another body, but actual motion has yet not started. Actual motion has yet not started is called static friction. Students, suppose there is a big box and we want to move it on a surface. Then we will apply a force on this box in this direction, but box does not move on the surface. मतलब जैसे हम लोग ये फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज हम लोग ने इस बॉक्स पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, पर ये बॉक्स में कोई भी मोशन नहीं होता. इट मीन्स इस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है. दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. और उस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है? अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में. एंड अगेन फोर्स को हम लोग ने 2 न्यूटन से 3 न्यूटन अप्लाई किया है. देन उसके बाद भी इस बॉक्स में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है. एंड देन अगेन फोर्स को धीरे धीरे करके इंक्रीज करते गए हैं एंड आप लास्ट में 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है. जैसे ही 4 न्यूटन का फोर्स इस बॉक्स पे अप्लाई करते हैं तो बॉक्स क्या हो जाता है? मोशन में आ जाता है. इसके पहले 3 न्यूटन तक मोशन नहीं था. इट मीन्स जो 3 न्यूटन का फोर्स था उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन. मीन्स किसी भी बॉक्स में या किसी भी बॉडी में मोशन जस्ट स्टार्ट होने से पहले तक का जो फोर्स होता है उस फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? द फ्रिक्शनल फोर्स that comes into play when one body is actually sliding over the surface of the other body is called sliding friction. Means to say, when the body begins to slide over the surface, then the force exerted by the surface on the object is called sliding friction.
मीन्स कोई भी बॉडी जैसे ही उस सरफेस पर स्लाइड करना स्टार्ट करती है तो उस सरफेस के द्वारा जो उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Now, what is rolling friction? The frictional force that comes into play when one body is actually rolling over the surface of the other body is called rolling friction. Means to say, when the body rolls over the surface, then force exerted by the surface on the object is called rolling friction. मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब किसी सरफेस पर रोल करना स्टार्ट करती है तो सरफेस के द्वारा उस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई होता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन. स्टूडेंट, static friction is more than sliding friction and sliding friction is more than rolling friction. मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी और रोलिंग फ्रिक्शन से भी. इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है. ये फोर्स इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उस समय बॉडी कोई भी स्टेशनरी पोजीशन मतलब रेस्ट पोजीशन में है, तब हम लोग बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स लगाते हैं और उस समय का फोर्स सबसे ज़्यादा हाई होता है. इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे हाई होता है. सो स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन दिस क्लास. थैंक यू.